हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदित्य फाइनेंशियल इनसाइट। तो गाइस, एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज गाइस चैप्टर नंबर 8 का लेसन नंबर आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम आपको शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम बैलेंस शीट मैट्रिक्स से शुरुआत करेंगे गाइस। तो देख सकते हैं बैलेंस शीट मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ने को है, तो हम देखेंगे बढ़िया से। बाकी इसके पहले जो भी मैंने पढ़ा था वो मैंने आप लोगों के सामने अपलोड कर दिया है, तो आप देखिएगा जिन लोगों ने भी पढ़ाई शुरू किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस, रिसर्च जर्नलिस्ट। आपको सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एज ए फाइनेंस बैकग्राउंड हो तो दो बहुत इम्पोर्टेंट, एक इक्विटी मार्केट और एक रिसर्च एनालिस्ट। तो ये दूसरा रिसर्च एनालिस्ट मैंने शुरुआत किया, तो शुरुआत करते हैं। ठीक, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट most often fail to properly reflect the fair value of asset on account of certain accounting concept and convention such as historical cost concept, money measurement concept. Further, the standard categorization of balance sheet in line items may not be suitable for all types of analysis. Therefore, analysts often compute additional metrics. Total डेप्थ क्या होता है? टोटल डेट में देख सकते हैं, डेट आर ऑब्लिगेशन that are settled through the cash and involves interest that are given as a compensation for the time value of money. To that extent, debt is different from all other liabilities. Therefore, analysts may need to identify the total value of debt. This is calculated by the summing long-term debt, current portion of long-term debt, short-term debt, and financial lease obligation and accrued interest. In the case of Bharti Airtel, it had consolidated debt 12.87 million as shown below, refers exhibit on the balance sheet, not on the borrowing. तो आप देख सकते हैं एग्जिबिट 8C टोटल डेट ऑफ भारती एयरटेल एलटीडी एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2019 में आप देख सकते हैं ये सिक्योर लोन है गाइस, जो कि 1413 से 16,865 से 1413 में हो गया। अनसिक्योर लोन 1,75,551, तो पहले 71,000 था। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, डेफर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो आप देख सकते हैं टोटल डेथ कंपनी का क्या हुआ, 12,87,036, जो कि लास्ट ईयर 31 मार्च 18 को 11,41,500। मतलब सोच सकते हैं गाइस कि कोई भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कितने डेथ में होती है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई कंपनी डेथ फ्री बहुत कम ही होती है, मैक्सिमम कंपनी का डेथ होते हैं। वर्किंग कैपिटल देख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल refers to the amount of money that is locked in the day-to-day operation of the business. It is often collected as a current asset minus current liability. तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है गाइस? करेंट एसेट में करंट लायबिलिटी को घटाते। लायबिलिटी क्या होता है? जो आप किसी भी चीज को खरीदते हैं उसको यूज करने के लिए, वो आपका एसेट नहीं होता। जैसे कि आप किसी कंपनी में गाड़ी लिए तो वो यूज करते हैं, वो आपकी एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। ठीक, तो वो हो गया वैसे वर्किंग कैपिटल में। एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द भारती एयरटेल एलटीडी शोइंग एग्जिबिट 8D, इट वर्किंग कैपिटल वाज नेगेटिव 601.49 billion, current asset of 329 billion, current liability 930.55 billion। तो देख सकते हैं गाइस, अगर किसी भी कंपनी का गाइस लायबिलिटी ज़्यादा है तो समझ जाइए कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। कोर वर्किंग कैपिटल क्या है? द करेंट एसेट ऑफ द कंपनी ऑफन इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट which are not necessarily meant for the business operation. Similarly, current liability of the company includes many short-term obligations which do not necessarily arise out of the day-to-day operation. Example, तो देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ current maturity of long-term debt देख सकते हैं। Therefore,
कैलकुलेटिंग वर्क कैपिटल एज ए डिफरेंस बिटवीन द करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल वही होता है गाइस जो कि करेंट एसेट है, उसमें हम लायबिलिटी को हटा देते हैं, जो बचता है वो वर्किंग कैपिटल हो गया। इज मिसलीडिंग, देयरफॉर एनालिस्ट कंप्यूट ए core working capital which only factors in current assets that are used or arise out of core operation. Often it calculated as investor plus trade receivable minus trade payable. देख सकते हैं the core working capital of Bharti Airtel at the end of financial year 19 was a negative 2.36 billion as shown in below. तो आप देख सकते हैं गाइस, ये है डेट रेशो एयरटेल का जो कि 2,36,141 करोड़। वहीं बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस देखें कंपनी किस तरह से लोचा करता है। इसमें दोनों है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ए फर्म फॉर ए गिवन पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस वो ऐसा है चीज गाइस जिसमें कि एक लिमिट समय में कंपनी ने क्या ग्रोथ किया, क्या परफॉर्मेंस किया, वो एक डिसाइड करता है, डिसाइड फैक्टर होता है। इंडिया शेड्यूल 3 में कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख सकते हैं हालांकि इंडिया AS1 रिक्वायर्ड दैट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुड mandatorily include other comprehensive income. Accordingly, its items contributing to other comprehensive income are shown below the net profit. देख सकते हैं the format applicable for banking, insurance, utility company are prescribed by the respective regulator and they need not follow format given in Schedule 3. The following exhibit show the consolidated profit and loss account statement of Bharti Airtel Ltd for the year ending financial year 2019. As an example, profit and loss statement tend to look different for the different industry as nature of the income and expense may vary. तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव A में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भारती एयरटेल एलटीडी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 से देखें तो आप देख सकते हैं इनकम टोटल 8,10,714 का था और लास्ट ईयर 8,28,876। तो देख सकते हैं इस बार इनकम कमी हुई है। वहीं एक्सपेंस में आप देख सकते हैं 5,49,613 का एक्सपेंस है, लास्ट ईयर 5,25,597 यानी एक्सपेंस बढ़ा है कंपनी का गाइस। तो इनकम घटा है और एक्सपेंस बढ़ा है तो कंपनी से और लॉस में जाएगी। तब देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेक्टेशनल आइटम। तो टोटल मिला के आप देख सकते हैं 2,61,101 करोड़। इस बार का ज़्यादा हुआ, पिछले साल कम हुआ पिछले साल की तुलना में। लॉस एंड प्रॉफिट बिफोर एक्सपेक्टेशनल आइटम एंड टैक्स देख सकते हैं 46,606। वहीं टोटल लॉस एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,318 देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आप देखिएगा तो 16,875 है जो कि लास्ट ईयर 21,855 है। अब अदर कॉम्पनसेटिव इनकम आप देख सकते हैं कि यानी पिछले साल की तुलना में इस बार कंपनी का प्रॉफिट है जो कम हुआ है, यानी कंपनी लॉस में गई है। तो इस तरह का है गाइस, आप हर एक चीज़ में देख सकते हैं बारी बारी से। द कंप्रिहेंसिव लॉस फॉर द ईयर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, तो ये रहा जो अर्निंग पर शेयर 5 रुपया फेस वैल्यू आप देख सकते हैं। तो इस तरह का होता है, लोचा कंपनी करती है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइन आइटम, कॉमन प्रॉफिट लॉस अकाउंट आइटम्स में देख सकते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ अर्न बाय द कंपनी बाय द सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। रेवेन्यू होता है कोई कंपनी है जो उसका जो फीचर होता है सेलिंग का या सर्विस का, जिससे उसका कंपनी का टोटल जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपका रेवेन्यू में जाता है। इट्स इंक्लूड
income from source that are part of core operational are included identical Tereto. Some companies source income from one corporate as a revenue and income that are identical to core operation as other operation income. Other income में आप देख सकते हैं income typically include non-operating income such as income from investment, profit or sales asset. However, in case of Bharti Airtel, it has reported other income separately below the operating profit line. तो अदर इनकम में ये होता है गाइस, बहुत सारी कंपनियां इक्विटी मार्केट में एज ए लोन बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंपनी में, तो उससे जो इनकम होता है वो हो गया आप अदर इनकम। एक्सपेंस में आप देख सकते हैं द एक्सपेंशन रिपोर्टिंग वेरियस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। कॉमन लाइन item that exist irrespective of the industry include employee cost, depreciation, finance charge. In case of manufacturing industry, company report three more standard line items being cost of raw material, purchase of stocks in trade, changes in inventory of finished goods, expense that are not separately disclosed are include part of the other expense। तो अदर एक्सपेंस में ये होता है कि प्रत्येक हर एक कंपनी हर एक चीज़ नहीं डिफाइन करता है। कंपनी परचेज करता है, शेयर भी परचेज करता है, मशीन ऑपरेटिंग मशीन भी करता है और एम्प्लॉय को देता है पैसा, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया अदर इनकम। एंड इंटरेस्टिंग डिफरेंस in financial reporting between India and rest of the world is that India are the expected to general purpose of a statement, while many other parts of the world expect them to cater primarily to investor. This make expense reportedly in India vary significantly compared to rest of the world. In India, financial statements, some line items such as raw material have a higher level of disclosure requirement, while in some cases such as other direct expense, the disclosures requirements are lower. This in turn creates certain challenges. For example, while raw material costs are disclosed, other components of direct cost are not directly disclosed. This creates challenge in calculating gross profit. Like other country में रॉ मटेरियल कॉस्ट को डिस्क्लोज करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, बल्कि इंडिया में इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है। द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑन वेरियस एक्सपेंस रिपोर्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि आपको पता है इंडिया में कोई रॉ मटेरियल ज़्यादा है नहीं, तो एक्सपोर्ट नहीं इम्पोर्ट होता है, जिसके कारण कि आपको कंपनी हर एक कंपनी वो रॉ मटेरियल करेगा ही, क्योंकि उसी पर मेन काम ही होती है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं, this represent of amount of raw material consumed in the production process. For the company that follow periodic inventory accounting system, same in computed as purchase plus opening stocks of raw material minus closing stock of raw material. Purchase of stock in trade, this represent amount of spent toward the purchase of goods that are sold to customer without any additional processing. Thus, the most of the purchases in the retailer sector would is shown under this head. Changes in inventory of WIP and finished good. As per the generally accepted accounting principle, expenditure incurred toward the production of goods is retained in inventory until the goods are disposed. This line item represents the difference between opening balance and closing balance of the work in progress and finished goods. एम्प्लॉय कॉस्ट में देख सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट रिप्रेजेंट सैलरी बेनिफिट मोटिवेशनल एक्सपेंस टुवर्ड स्टॉक बेस्ड compensation granted and staff welfare expenditure include toward the employee. The cost includes an annual provision toward the retirement benefit earned by the employee during that year. Depreciation and amortization क्या है? Depreciation refers to the gradual and permanent reduction in value of the asset or accounting of aging. Use of obsolescence. तो डिप्रिसिएशन ये होता है जैसे कि कोई कंपनी मशीन खरीदा, समय के साथ वो उसकी एज कमता जाएगा, तो उसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसकी तो वैल्यू कमती जाएगी। ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन।
Depreciation can be accounted under many methods. India's AS16 requires that method of depreciation take into consideration that way the asset is used. Thus, cab operator may depreciate its fleet based on the amount of distance a car can travel in lifetime, while another company may depreciation based on its useful life measured in a year. Amortization क्या है? Amortization देख सकते हैं. It refers to the gradual write off intangible asset over the period of life. Most company write off asset. Finance cost क्या है? Finance charge refers to expenditure incurred toward the interest, processing fee, and amortization of expense incurred toward the security insurance. तो फाइनेंस कॉस्ट हो गया है जब हम किसी से कोलेबरेशन करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है और उसके बदले में हम कुछ एग्रीमेंट करते हैं, उस पर जो फी लगता है वो गया फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा. ये हो गया अदर एक्सपेंस. देख सकते हैं expense that are not independently large are often combined and classified as other expense. Company provides note to account that give more detailed disclosure on the same. Income from equity accounted entities. This is referred to the company's shares of profit and entities which is accounted under the equity method. Refers to the investment in joint venture, associates in section, exceptional item, non-recurring item. This refers to income or expense that do not normally arise under normal course of business. They include loss on account of natural climate on time, regulatory changes, charges, and such their item. Tax expense of Indian company include three components: current tax, MAT, and deferred tax. Current tax क्या है? Current tax represent tax payable for given year of the then MAT paid can be utilized as a credit for the future. Thus, in the theory, MAT paid should be shown as asset in the balance sheet. MAT आपको as asset show करना पड़ेगा. However, if a company believes that it may not be able to get credit for the MAT paid within the allowed duration, they expense it in profit and loss account. Deferred tax income expense has no cash impact, but it arises out of accounting treatment given to recognizing future tax benefit or obligation that arise on account of event that had occurred in the past. Profit allocation to non-controlling interest, minority interest. This refers to the amount of profit a subsidiary company that belong to the external shareholder of the subsidiary. अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर में देख सकते हैं EPS is calculated by dividing the net profit attributed to equity shareholder by the average number of shares outstanding in terms of EPS. A company disclose basis EPS and dilute EPS. Basic EPS क्या है? Basic EPS is calculated by the dividend net profit by weighted average number of shares outstanding. Diluted EPS का diluted EPS assume that any instrument that can be potentially converted into equity share without payment of full consideration indeed converted. Thus, it's assumed that in the money, warrant, ESOPs, and convertible instrument are converted into equity. The potential impact of such exercise conversion on the profit and loss account are also factor diluted EPS in the calculated by dividing adjusted net profit number by the diluted share count for loss making company. Diluted EPS and basic EPS are one the same. अदर comprehensive income आप देख सकते हैं. Other comprehensive income refers to the income or expense that are required to permitted by past profit loss account. It's mostly comprised of changes in value of asset and liability on account of non-operating factor
They include foreign changes in revolutionary surplus, remeasurement gain, loss or defined benefit plan. Gain or loss arise on account of translation of financial statement of foreign operation. Changes in fair value of financial asset or liability that are accounted through OIC. Gain or loss on account derivatives contract that effectively hedge risk. Part of the OCI is subsidiary operation that belong to the external shareholder should be allocated to non-controlling interest, minority interest. देख सकते हैं की मैट्रिक्स फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। की मैट्रिक्स क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? A detailed analysis of profit and loss account involves calculating several profit metrics in addition to the what is profit before tax and net profit. Most companies present a single step profit and loss amount account. In a single step profit and loss account, company add all their income and from they reduce all their expense to calculate profit before tax. However, some company chooses to present multi-step profit and loss account in exhibit shown above. Bharti Airtel has presented multi-step profit loss account where the operating profit before tax depreciation non-operating item commonly referred to EBITDA is calculated. Other expenses are reduced from that. However, even in case where a company does not present a multiple statement, analysis tend to convert them into multiple state statement for the purpose of analysis. This following is with shown a profit and loss account of Bharti Airtel Ltd redrawn by analyst to capture some more profit metrics. Note that below exhibit analyst has used positive sign to donate income and negative sign to donate expenditure. तो आप देख सकते हैं ये है मल्टी स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भारतीय एयरटेल का फाइनेंशियल ईयर 19 और 18 का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 19 में कम हुआ अगेंस्ट 2018। ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हैं दोनों ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गया पर टोटल रेवेन्यू में कमी आई। वही नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी देख सकते हैं बढ़ गया। एक्सेस चार्ज में भी बढ़ोतरी हुई। लाइसेंस फ्री सब्सक्रिप्शन चार्ज में कमी आई। एम्प्लॉय बेनिफिट में कमी आई। सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में भी कमी आई। अदर एक्सपेंस में बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं ईबीटा में आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन बढ़ गया। ईबीटा 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 एंड ईबीटा आप देख सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस इनकम नॉन ऑपरेटिंग। ईबीटा में डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन होता है। ईबीटा में फाइनेंस कॉस्ट एंड फाइनेंस इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सपेंडिचर देख सकते हैं इंक्रीज हुआ। एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन आइटम्स में आप देख सकते हैं बढ़ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी है। लेस करेंट टैक्स 19,000 बढ़ गया। लेस डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख सकते हैं दो तरह का होता है करेंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देख सकते हैं एक्सेप्शन आइटम एंड टैक्स इम्पैक्ट ऑन एक्सेप्शन। एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम गया पिछले साल। इफेक्टिव टैक्स रेट नॉट मीनिंगफुल एंड लास्ट ईयर 33% था। तो ये रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। और हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में इसमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का टोटल प्रॉफिट इट इज कैलकुलेटेड बाय द रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू। इट इज सुटेबल मैट्रिक्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इट्स रिफर टू द सरप्लस दैट कंपनी कैन यूज meet its fixed expense in case of the Indian company. Since they do not disclose direct cost separately, expected cost of raw material, it is not possible to calculate this matrix. Earning before interest, tax, depreciation and amortization. EBITDA में आप देख सकते हैं इसका होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड amortization. Net profit of the company is affected by the interest expense, depreciation and amortization. Interest expense is driven by the funding choice
of the company, while the depreciation and amortization are driven by the accounting choice in the term of methodology and estimate the useful life. Similarly, company may also earn certain investment income or other non-operating income, which are again driven by the choice of the treasury management. All these items affect a proper comparison of operating performance between two companies. Further, these items also cause a tax impact before analysts prefer to compute adjusted EBITDA, which is computed without taking of the line items. EBITDA में देख सकते हैं also serves a proxy of cash profit earning by the operation. Earning before interest tax EBIT में देख सकते हैं. Although EBITDA is a useful matrix, it's omit to factor in impact of the capital expenditure completely. Some capital expenditures are recurring in nature. Example, purchase of the computers and other assets short-term life. Therefore, ignoring such expenditure may give a mislead result. Therefore, the analyst compute EBIT, which takes into consideration depreciation and amortization as expense. Most analysts also refer to EBIT as operating profit. However, since this matrix is not defined by accounting standards, multiple interpretation of the operating before tax exist. Adjusted before tax, after the tax, exceptional item and non-recurring item affect comparability of net profit number. Therefore, the analysts often tend to calculate adjusted net profit, which eliminated the impact of this exceptional item. While calculating the impact of exceptional item on net profit, it is also necessary to factor in their tax impact. This is typically done by multiple the exceptional item with the effective tax rate calculated as tax expense divided by the net profit. Often, adjusted profit calculation may involve some arbitrary adjustment that require an analyst adjustment, as all necessary number may not be available. For instance, the effective tax rate for Bharti Airtel Financial 2019 is meaningless, as a company has paid huge tax despite reporting losses. Under their circumstances, analysts may have to take judgment call on how to factor in tax impact. A statement of changes in shareholder equity. India's one requires companies to represent a statement of changes in shareholder equity to show the impact of various type of transactions on various components of shareholder equity. The following exhibit shown a statement represented Bharti Airtel Annual Report 2019. तो देख सकते हैं गाइस, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर इक्विटी में आप देखेंगे ये आपका इतना साफ से नहीं दिख रहा है कौन सा रिलेटेड स्टेटमेंट है. बेसिस ऑफ कैश फ्लो आप देख सकते हैं. कैश फ्लो जनरेटिंग कैश इन क्रिटिकल ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट do not focus on cash flow since accounting is on accrual basis. Under accrual basis, income is recognized when it's earned rather than when it's received. Similarly, expenses are recognized when it is incurred rather than when it's paid. This creates difference between the profit shown and the actual cash flow generated. Let's us take an example. हम example के समझते हैं guys. If a business does all cash purchase say 80,000 and cash sales 1 lakh, there would be profit 20,000. Business would be able to touch that cash as money has already come in. However, think this business where purchase is done on cash, sales is done on credit, profit and loss statement would be show profit 20,000. But fact is that there is no money. Indeed, if the business not able to collect due from its customer, there will be no profit. Even in capital of the company, 80,000 likely to be lost. Therefore, along with profit and loss statement,
and balance sheet. The cash flow generated by the business also need to be assessed in the absence of cash. While the may be profit, they would be more proper profit and not real profit. To understand the concept further, there are cash inflow, cash outflow. Every business has a money company and money goes out. Simplicity and understanding purpose cash flow are broadly divided into following category: operating cash flow, investing cash flow and financing cash flow. तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो में सबसे पहले क्या कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस आइटम इनकमिंग कैश इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग कैश इज नेगेटिव net profit of a company can be converted into the operating cash flow number by adding back non-cash expenditures such as depreciation and amortization and changes in accounts receivable and payable. Investing cash flow क्या cash flow on account asset buying asset is negative cash flow and selling asset is positive cash flow. फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या है कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटीज हो गया बोरो मनी या एक्सपेंडिचर इक्विटी पॉजिटिव कैश फ्लो redeem debt and equity negative cash flow. The following exhibited reproduced cash flow statement on Bharti Airtel Limited shown in their 2019 annual report. तो देख सकते हैं ये कैश फ्लो भारती एयरटेल का आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 32,607 करोड़ था इस बार मात्र 17,000 वहीं ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल आप देख सकते हैं 2,67,782 हो गया जो कि आखिरी साथ 3,06,355 ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट कैश जनरेटर बिफोर टैक्स में आप देख सकते हैं 2,09,000 लास्ट 3 लाख मतलब बहुत कम हो गया नेट कैश जनरेटेड ऑपरेटिंग 1,97,880 लास्ट ईयर 2 लाख मतलब आप देख सकते हैं कैश फ्लो में भी गिरावट देखने को मिला है तो ये एयरटेल का देखा जाए तो नेट कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ गया पिछले साल की तुलना में तो आप देख सकते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप देख सकते हैं लोन हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटी में इस बार ग्रोथ ही देखने को मिला लास्ट ईयर की तुलना में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो इस तरह का होता है गाइस if a business continuously running negative operating cash follow for the several years there is an alarming risk of single of risk a business which continuously running negative operating cash flow would need continuous does of stimulus in terms of cash borrowing equity expansion to keep going needless to state that over a period of time either it will turn into positive operating cash flow business or die down the absence of cash stimulus when the investor or lender refuse to pump in future cash Kingfisher Airline had negative operating cash flow for a year hence the financial अब किंगफिशर एयरलाइन जैसे इसमें किंगफिशर के बारे में बताया गया है कि लगातार 4 साल 5 साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर होती है तो आपको यही होगा जैसे किंगफिशर का हाल हुआ कि आपको एक समय पैसा नहीं बचेंगे एम्प्लॉय को देने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है कोई कंपनी चलाने के लिए नेगेटिव कैश फ्लो ना हो जैसे कि आप देखते हैं किंगफिशर का है 2009 से लेकर 2013 के बीच में आप देख सकते हैं 645 करोड़ 1665 करोड़ 2.2 करोड़ अब इसी से बढ़ता जाएगा ये मनी कंट्रोल व्यवसाय से लिया गया द एयरलाइन borrowing money to pay interest EBIT was much lower than interest obligation of several years in the past. At a point in time, it stopped as a lender refused to pump in future cash, and the business did not turn positive operating cash flow even after the infusion of capital. It should be clear that no business can run on the condition expense on borrowed money. Whenever a business is expanding, it would need cash. Negative investing cash flow are financed through their positive operating cash flow. Accumulated positive operating cash flow, bank balance, and positive financing cash flow, borrowing and issue of the equity. Business that depends
depends exclusively on borrow fund for the expansion happen to be the bit cautious. These assets that appear in balance sheet may lie lower than their book value shown in a balance sheet, but the liability have to meet it total. Some other point to be keep in mind case of cash flow. Looking at net cash flow could be deceptive. Each of the cash flow stream, operating, investing, financing have to be analyzed independently. The objective cash flow analysis has to be focused sustainable, recurring cash flow. No recurring extraordinary items impact cash flow should be recognized as adjusted. तो गाइस इससे आप ऐसे मिला कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए कि क्या निगेटिव है पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कैश फ्लो निगेटिव ना होना चाहिए। तो इससे आपको ये पॉजिटिव निकला। देखते हैं नोट ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या है? इन एडिशन टू द फोर स्टेटमेंट मेंशन एबव, कंपनी आल्सो हैव टू गिव डिटेल नोट्स स्पेसिफाइंग their accounting policy and providing details of information contained in the four statements. Among the other things include the following. Significant accounting policy क्या है? There are multiple ways to account for items. It is critical for analysts to know what methodology of the company has adopted to account for an item. For instance, of depreciation, company may search between straight line method of depreciation or the written down value method of depreciation. Accounting policy of the company defined in annual report would be defined how that item is treated by the company. In other words, accounting policy are the way compounds for various items, profit and loss statement and balance sheet. Accounting policy are important for an analyst to understand that there are different ways to accounting of a single item. An analyst should know how a particular business is treating that items. Company are also required to mention clear if there is any changes in the account policy in comparison variation. If a company is continuously changing in accounting policy, it may be reasons of suspicious and closer scrutiny of whether the company is trying to manipulate the financial. Second, contingent liability. Contingent liability are liability that may incurred by entity depending on outcome of an uncertain future event. For example, company may be fighting court case which may result into the substantial loss of the company. If the case is lost, these liability are not recorded in the company account, then they are recorded in the note of account. For a minute example of the contingent liability: outstanding lawsuit, dispute with tax authority, bank guaranteed provider, product warranty claim, pending investing of the case, changing in effects of government policy. While most of the management would always be positive and state that to don't see the liability setting against them on, always better to looking at the quantum of especially comparison to the size of profit and loss statement and balance sheet. If the size of a contingent liability is larger comparison to balance sheet, the business one needs to exercise cautious while analyzing of balance sheet क्या है guys? Simple strategy: any asset of a liability that does not appear on the company balance sheet is on off balance sheet item. For example, loan taken as a part of liability in the books of the company. Operating lease, which is alternative way to financing asset on off-balance sheet item. Contingent liability, as defined above, also off-balance sheet item. Similarly, if the company has entered into derivative control contract to trade hedge its position that will not appear on the balance sheet and would be covered as a note of account. An annual report, given that existence of so many business worldwide has been threatened by the derivative transaction. It is critical for an analyst to analyze all of balance sheet items in great details. While the positive surprise item
of balance sheet items are fine negative once the risk and should be dealt with a great details by the analyst. Important points to keep mind by looking financial. आप देख सकते हैं इसमें financial statement analysis can be intimidating if the terminology are not known. However, the same number become addictive if the language is understood. Number can made to look good by the making assumption by creative accounting qualification of the auditors in notes of accounting 5 print. Very useful part of the annual report. Changing in accounting period can lead to confusion while the comparing previous year number. Similarly, of items can increase or decrease profit. If there is no study properly, the entire analysis can change. Consistent performance 5 year after year best for the investor. A company which continues to grow in sales, increase profit, increase net worth, reduce debt and improve margin and finally improve return on net worth for the investor is one which will create value over the long term. तो आप देख सकते हैं अब आ जाते हैं रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग. A company management is responsible for the preparing the account. The auditors verify the account to ensure that the financial statement present true and fair view of the accounting. It's important to note that the auditors often are based on information provided to them. The nature of the audit segment engagement is such that auditors would not be able to watch of the accuracy of the accounting. Several factors are responsible for this. Firstly, amount of the transaction that happening in company significantly large. Thus, it is impossible for auditors to check whether all the transactions were completely and accurately accounted. Therefore, the auditors verify whether the company has adequate control system in place to prevent major issue correctly and accurately capturing and recording a genuine transaction. When they are satisfied, they check whether these control systems were properly implemented. After they are satisfied with the working of the control system, they assess whether the company has followed all accounting standards and principles in measuring, disclosing the line item. Based on their assessment, they provide a report which can fall under any of the following category. Clean report में देख सकते हैं a clean opinion is given when auditors have no issue with their report. Typically, the format and content of the clean report is fairly standard and most look same across company. Only certain financial information presented in line company auditors report order may vary. Disclaimer: auditors provides disclaimer when they are unable to verify any part of the financial on account of non-availability of the information. Qualified report में देख सकते हैं a qualified report is given when the auditors are convinced that whole or part of the financial statement do not reflect to fair value. These may arise when the auditors disagree with the accounting policy being followed by the company or if they believe that there are some other serious discrepancies in the financial statement. In case of the disclaimer of the opinion or qualified report, auditors would be elaborate reason for the providing such report. While reading the financial statement, analysis should go through the auditor's report to check whether auditors have had any representation. तो देखते हैं आज का वीडियो का हमारा पार्टनरशिप लेमन ब्रोकरेज फर्म का है जो कि इंडिया का एकमात्र एआई इंट्रोड्यूस वोल्ट ब्रोकरेज फर्म है जिसमें कि आप लाइव एक्टिविटी, लाइव एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप बहुत इजीली कर सकते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी को बहुत ही ईजी और सुटेबल बना सके, जिसमें आपको गाइस जीरो ब्रोकरेज फर्म के साथ आप जुड़ें और 10.95% आपको इंस्टेंट मार्जिन ट्रेड फंड आपको अवेलेबल कराएगा
तो आप इसे एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 1.5 मिलियन ट्रेडर प्लस का पार्टनरशिप और ट्रस्ट है गाइस। तो आप भी इसे ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें। इसे डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से ओपन करें, ट्रेड करें। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।